Namaste. Good evening. Judge a man by his questions rather than his answers. To open with this insightful statement from Voltaire is a good way to express what happens at PIES. We learn to question, analyze, and finally communicate our own thoughts and ideas. आज प्रतियोगिता का दौर है और इस प्रतियोगिता के दौर में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सफलता के मानक गढ़ना चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ अंकों से सफलता प्राप्त होगी? शायद नहीं। दुनियादारी समझने और आगे बढ़ने के लिए शोधपरक शिक्षा और निष्कर्षपूर्ण चर्चा की नितांत आवश्यकता है। इसी आवश्यकता हेतु हम यानी प्राइवेट इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल शुरू करने जा रहे हैं बुद्धिपरक चर्चात्मक कार्यक्रम पायस टॉक, जहां विचारों की स्पष्टता होगी, बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी और उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिसे वर्तमान और भावी पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। So here we are. I am Ashna together with my friend Ramaisa, and we will be hosting this inaugural event of PIES Talk to promote research, independent learning and communication. Now, I will be introducing our two guests for the first PIES Talk, Suresh Prabhu ji and Major General Rajan Kochhar ji. We also welcome the stalwarts of our school administration, Vice Chairman Mr. Suresh Ramachandran and our respected Vice Principal Ms. Mini Ramesh. Welcome to PIES Talk October 2022. Major General Rajan Kochhar. He is the former Major General Army Ordnance Corps Central Command, has a PhD in Management, is the member of Center of Joint Warfare Studies and Institute of Defense Strategic Analysis, Senior Advisor of Defense Research and Studies, Indic Research Forum, and Politum Consortium Research Institute, and an individual who has a burning passion for nation building. He is currently the Vice Chairman of the National Council of News and Broadcasting, New Delhi. We welcome you, sir. Thank you. अतिथियों के परिचय के साथ ही आमंत्रित करते हैं हमारे आज के पाइस टॉक के पहले विद्यार्थी पैनलिस्ट को. Our student panelists for this session are Saqib Manzur of grade 9, Sagarika Manoj Parab, Dhruva Patadiya and Sanika Pai of grade 11. Now with the consent of Major General Rajan Kochhar ji, we begin our session, and the topic for our first session is a global perspective on security and what it entails in the 21st century. Please go ahead. I would now like to invite Sagarika to ask her first question. Good evening, my name is Sagarika. My first question is, what is the role of education in the global security and what are the opportunities available to the young people interested in this field? Thank you for asking me this question, and before I answer your question, I would like to thank your Vice Chairman, your Principal Mini, and Ravi Shukla for having invited me here and speak to you all, because you are the future leaders of tomorrow. It's important that all of you understand what the world geopolitics is all about, and many of you could also pursue a career and do a lot of research in geopolitics. And therefore, it is important to understand the dynamics in the world security environment today. A very interesting question that you have asked me, that what is the role of education? The role of education is multifaceted. It's not restricted to a sphere, a field, a subject. The role of education is multifarious. We, in today's world, we need to understand as students, as young people, what is happening around us. And therefore, it's important to educate us. And we should also understand why some nations behave the way they do. It's important to understand a foreign policy of a nation, on what aspects it is framed, and on the basis of that,
we will be able to decipher very easily uh, what kind of role each nation is playing in this world today. Therefore, uh, you have opportunities once you graduate out of your school and once you go into college and universities. You can study international relations, you can study area studies, you can study geopolitics, you can study political science, you can study history, geography. These are the areas which are related to geopolitics today. So it is important to understand today where is the world heading, what is happening. You must be aware Russia-Ukraine war is almost entering the seventh month, and it does not seem to stop. You must be wondering why it is not stopping and what is being achieved at the end of the day by Russia, or what is being achieved by United States or Ukraine in fighting this war. So it's important for us to understand that today we are living uh, in a so-called unipolar world. A multipolar world is desirable. And I hope you understand the difference between a unipolar and multipolar. A multipolar is that each nation is has a relevance of its own. He has the capability to fight by himself. He has the capability to protect the territorial sovereignty of its own country. A unipolar means that the world gets divided into two parts. What happened in the Cold War uh, prior to disintegration of the USSR? There was NATO countries, there were Warsaw Pact countries. The Warsaw Pact countries were with Russia and the Allies, and the NATO were with the United States and its allies. Today, after disintegration of USSR, the Warsaw Pact actually dissolved by itself. So only NATO was there, and NATO is almost approximately 30 plus countries. So they were a very strong alliance, and they started spreading their wings all over. They wanted to have a hegemony, or they wanted to control everything what was happening in the world. This was not acceptable to countries like Russia, countries like China. So now Russia and China have got together, trying to form an alliance which can counter United States or the NATO. And with Russia and China, you will find Iran, you will find North Korea, you will find Turkey, and you will find Pakistan also. So this is the way the future of the world I see in the 21st century. When we talk about this topic of today, the future of the world will emanate itself, or it will emerge as two major power centers. And we will discuss further in the subsequent questions how does India actually see its place here in the 21st century. So I hope I've been able to answer your question. धन्यवाद सर। अब अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सनिका को। Good evening, sir. My name is Sanika Pai, and my first question for you is has COVID-19 affected global security? If so, how?
Sanika, very good question. You want me to speak in Hindi, English, what is comfortable? So I either can is speak. Huh? either is fine, sir. अच्छा, इट इज फाइन. तो आई मैं आपको हिंदी में भी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज you people spoke such fantastic हिंदी. I don't think I can मैं इतनी अच्छी हिंदी भी नहीं बोल सकता जितनी आप लोग बोल पा रहे हैं. एंड इट्स अ मैटर ऑफ, ये गर्व की बात है कि इतने इसको बाहर भी हिंदुस्तान में रह के आप लोग इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रहे हैं. सो इट इज kudos to your school and to your parents and to, of course, you as a person also. So कोविड-19 में क्या हुआ? कोविड-19 में पूरा वर्ल्ड का जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो एक टेस्ट बेड बन गया. हमने हमारी कंट्रीज में देखा कि इतना स्ट्रॉन्ग पेंडेमिक, ब्लैक स्वॉन इवेंट इसको बोलते हैं. A black swan event is something which takes you by surprise, और वो ऐसे आता है एक भूचाल की तरह, एक अर्थक्वेक की तरह आता है, और आपको पता नहीं चलता कि उससे आप कैसे कोप अप करेंगे. इसको ब्लैक स्वॉन इवेंट बोलते हैं. कोविड जब हमारे पास आया तो हमने उसकी ग्रेविटी रिकॉग्नाइज नहीं करी. हमने सोचा नहीं कि ये हमारी लाइफ का हिस्सा बनने वाला है. हमने सोचा कि ये एक फ्लू है, एक आएगा और चले जाएगा. और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जब हमको ऐसा लगा कि पीपल स्टार्टेड डाइंग, मेडिकल में हॉस्पिटल्स में इतने बेड्स अवेलेबल नहीं थे, और पूरी इंडस्ट्री को हमको बंद करना पड़ गया. द एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी, आई कैन से, केम टू अ स्टैंडस्टिल. देयर वाज नो मैन्युफैक्चरिंग. देयर वाज होटल इंडस्ट्री was badly affected. Tourism was badly affected because all flights were stopped. Countries, we were not permitting people to come out and meet each other. Mask laga ke we were moving around all the way, and gatherings and schools and colleges were closed. So you see the overall impact it made to the economy of a country. Now the southern part of the world is economically not very strong, and the northern part of the world, if you see the countries, you will find they are better off economically. So these developing countries like India, like South Asia, Malaysia, Indonesia, all the Vietnam, all these countries, Middle East, their economy was affected because there was no economic activity from where the money will come to the government to revenue its activities. And the entire focus was on healthcare. पूरा healthcare के ऊपर focus चला. जब आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है कंट्री में, जब आपका मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है कंट्री में, जब आपकी जीडीपी इफेक्ट हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस टर्म बिकॉज यू आर सीनियर स्टूडेंट्स. तो जब आपने ये सब देखा और आपका एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स विच केम डाउन टू ऑलमोस्ट लेस देन 30. Today in India, the manufacturing index is almost 55. It came down to below 30. जब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन आएगा तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीथिंग. द इन्फ्लेशन विल गो अप, द cost of goods will go up, the demand and supply issue will be there. We also found in the car industry, the chip industry
there was a shortage of these chips. And because of that, people had to wait for 2 hours, 2 years to actually get a car of their choice. So you see the defense also, because I'm an army man, so I can relate to the defense industry. We were not able to modernize our forces. All the modernization plans went for a six. You have a look at the education. The healthcare was so stretched that there was a shortage of doctors, a shortage of nurses, a shortage of beds. So everywhere, and it is not related to only one country. Each and every country has been affected by COVID. And let me tell you, ये जो effect हुआ है, ये एक temporary setback नहीं है. This effect we will continue to feel for the next 5 years at least, if not more. So अगले 5 साल तक कोविड का इफेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में रहेगा. वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स इसको सस्टेन कर पाएगी, ये मुझे उम्मीद है. एंड विद वेरियस कंट्रीज लाइक इंडिया today has become the 5th largest economy of the world. So our country's growth rate from the World Bank has been announced, now has been revised and has been announced as 6.1%. China is 2.7%. तो अब हम एक ऑप्टिमिज्म के साथ हम जिएंगे और हम ये उम्मीद रखेंगे that our industry, our manufacture is already picked up. Our other areas of development are already picked up. Rates of unemployment which are there in India, I think I was reading in the morning, is around 6.8 to 6.9%. That is also going to come down. So overall, rich countries have been able to sustain themselves well. That is the developing countries, but they have also been affected, and India has been affected, but India has been able to sustain itself exceedingly well. I think possibly due to the good leadership of our Prime Minister, good policies which have actually emanated from the Finance Ministry, from the Economic Ministry, from the External Affairs Ministry. So all ministries have got together and have made themselves relevant in tough times. So I'm sure that in times to come, we'll actually emerge out of it. I hope I've answered your question. Thank you, sir, for such an insightful question. Now, I would like to invite Dhruva for the next question. नमस्ते, मेरा नाम ध्रुवा है और मेरा प्रश्न ये है कि हम सब जानते हैं कि युद्ध आक्रमण कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चले आ रहे हैं, परंतु कम होने के बजाय ये बढ़ रहे हैं. तो ये हिंसक मानवता और युद्ध और आक्रमण, आपके विचार से इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले एक कंट्री को युद्ध अगर उसको करना उसको पड़ता है तो उसके कारण क्या होते हैं? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी. जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आज की डेट में 21 कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं पूरे वर्ल्ड में. 21 कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं और उसमें 4 युद्ध आज हम लड़ रहे हैं जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट के ऊपर है. फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन वॉर, नगोर्नो काराबाख वॉर जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो रही है, कर्डिश और टर्किश वॉर जो टर्की और लिबिया के अगेंस्ट जो साथ में हो रही, सीरिया के साथ, सॉरी, टर्की एंड सीरिया के साथ हो रही, और इजराइल और पैलेस्टीनियन.
ये 4 क्षेत्र जो है ये बेसिकली जमीन का मुद्दा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये जमीन हमारी है, डिस्प्यूटेड एरियाज है, वहां पे हो रही है। और मैं चाइना और इंडिया की बात अभी नहीं करूंगा बिकॉज अभी वो युद्ध नहीं है, अभी वो एक डिस्प्यूट में हम लोग हैं। तो अगर आप उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 5 ऐसे एरियाज हैं जो हम लड़ाई जो हो रही है वो टेरिटरी के ऊपर हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट है चीज के एक कंट्री की अगर इंटरनल सिचुएशन अगर उसकी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उस कंट्री में सिविल वॉर होता है। जरूरी नहीं है कि युद्ध और एक देश और दूसरे देश के बीच में हो, देश के अंदर भी युद्ध होता है और उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। आज की डेट में 6 कंट्रीज में सिविल वॉर है और मैं आपको उदाहरण देता हूं, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, लिबिया और साउथ सुडान। ये 6 क्षेत्र हैं जहां पे सिविल वॉर चल रहा है। दूसरा, टेररिज्म की वजह से लड़ाई हो रही है, ट्रांसनेशनल टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, और इसमें 3 जगह लड़ाई हो रही है। एक तो अफ्रीका में एक देश है माली, वहां हो रही है। इस्लामिक मिलिटेंसी जो पाकिस्तान में चल रही है, और अल शबाब जो एक ग्रुप है जो सोमालिया और कीनिया में। और वजह युद्ध की है कि भाई जब जमीन का मुद्दा आएगा, जब नेशनल इंटरेस्ट एक कंट्री का और दूसरे कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट क्लैश करेगा तो युद्ध होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप उस कंट्री की, और अगर वो मैच्योर लीडरशिप है तो वो ये कोशिश करेगी कि हम लड़ाई करने के बावजूद बातचीत से अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, let me tell you that war is not a solution to disputes. आज तक, if you go back into history, no dispute has been resolved through war. तो अगर ये बाइडेन जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के अगर इस बात को अगर समझ जाएंगे तो रशिया और यूक्रेनियन लड़ाई बंद हो जाएगी। पर apart from this war issues, there are other economic issues. Nations चाहते हैं लड़ाई हो क्योंकि उनका मिलिट्री इक्विपमेंट बिके, उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री चले, उनके पास इकोनॉमिक वेल्थ बढ़े। सो ये वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं जो वॉर कराते हैं, जो अपनी इंडस्ट्री को और उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने देश की इकोनॉमी को और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये भी और इसको रीजंस है लड़ाई के, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, पर ये आपके 2 मेन जो आपके एरियाज हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। थैंक यू। आई होप कुछ समझ आया इसको लड़ाई के बारे में। यस। ओके। हमारे लिए खुशी की बात है कि सुरेश प्रभु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर, हम आपसे इजाजत लेके सुरेश जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। Yes, please. And my welcome to Suresh ji. It's a pleasure to be on your share the stage with you, and it'll be wonderful to listen to you, sir. श्री सुरेश प्रभु जी, आप भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आपने केंद्रीय मंत्री 10 से अधिक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है, जिसमें रेल, ऊर्जा, पर्यावरण व वन, नागरिक उड्डयन,
वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय रहे हैं। आप 4 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। Our student panelists for this session are Ayush Bisoi from grade 9, Archit Chipunde and Mrinal Khadilkar from grade 11. And the topic for our session is Indian service sector in the next 5 years. What can this generation expect? Now I cordially invite Mrinal to ask her first question. नमस्कार सर, मैं मृणाल। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है आगे जाकर इंडिया के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करना या इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना भारत के लिए क्या ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं आ रही। So we're not able to hear you. We're not able to hear you, sir. सर आई डोंट थिंक आवाज़ नहीं आ रही सर। आप देख रहे हैं पायस टॉक, जहां विचारों की स्पष्टता होगी, बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिसे वर्तमान और भावी पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। You are watching PIES Talk to promote research, independent learning and communication. सुरेश जी का हमारे साथ संपर्क टूट गया है, इसलिए हम मिस्टर राजन कोचर जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगले सवाल के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ साकिब को। नमस्कार, मैं साकिब हूं और मेरा आपसे सवाल है। विश्व के बड़े देश अपनी सुरक्षा पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। भारत ने अकेले 2021-22 में 3,62,345 करोड़ रुपए यानी 49.6 बिलियन डॉलर्स खर्च किया। हमारा वैश्विक समाज अगर हमारा वैश्विक समाज सुरक्षा संबंधित समस्याओं के पीछे ना भागे और लोगों के विकास और निर्माण पर इतना पैसा खर्च करे तो विश्व में क्या बदलाव आ सकता है और ऐसा फैसला हमारे विश्व को कैसे प्रभावित करेगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक हैज बीन म्यूटेड। अच्छा ओके, अब आएगी। अब आ रही है आवाज? यस सर, अब आपकी आवाज आ रही है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो देश अपने आप को सिक्योर नहीं रख सकता है वो देश का हाल होगा जो यूक्रेन का हो रहा है, वो देश का हाल होगा जो अफगानिस्तान में हुआ कि भाई टेररिस्ट ने आके अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और उसकी आर्मी नाकाम रही और यूएस वहां से निकल गया और वो मजबूत नहीं थी फौज और ऐसे आ गए।
अगर आपका देश सिक्योर नहीं होगा तो कल आप देखेंगे चाइना भी आपके अंदर आके बैठ जाए। आज चाइना आपसे डरता है, बॉर्डर पे आपने उसको रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? क्योंकि आपके पास इतनी फौज है और इतनी आपके पास मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट है, हथियार हैं कि आप उसको रोक सकते हैं। पाकिस्तान को हम घुसने नहीं देते, उसकी इन्फिल्ट्रेशन को हमने 70% हमने कम कर दिया पिछले 1 साल में। ये कैसे हुआ? बिकॉज हमने वहां ड्रोन्स लगाए, हमने वहां सेंसर्स लगाए, हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट इजराइल से लिया, हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया। और आप जानते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस अगर एक्सपेंडिचर है जीडीपी का, जो अगर वो हिस्सा है वो 2.4 या 2.5% है। पूरे जीडीपी में खाली डिफेंस एक्सपेंडिचर 2.5 से 2.6% है। चाइना ऑलमोस्ट 7 to 8% अपने जीडीपी पे डिफेंस पे खर्च करता है। तो हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है वो पिछले 10 साल से पीछे चल रही है। आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को 43 स्क्वाड्रन्स ऑथराइज्ड है, इंडियन एयरफोर्स के पास 31 स्क्वाड्रन्स है। आप जानते हैं कि हमको नेवी में हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमको चाहिए हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स के लिए, और हमारे पास खाली 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। हमारी जो बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है इस कंट्री में, वो है 15,000 किलोमीटर, और उसमें 10,000 किलोमीटर डिस्प्यूटेड है। हमारी मैरीटाइम जो बाउंड्री है वो है 7,500 किलोमीटर, और 7 कंट्रीज के साथ हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है। और जितने भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट जोन देखिए कितनी है। पाकिस्तान है, चाइना है, और जो नॉर्थ ईस्ट से जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हमारी कंट्री में टेररिज्म आता है, म्यांमार से आता है, भूटान से आता है, बांग्लादेश से आता है, रोहिंग्यास की प्रॉब्लम है, इतने जो रेफ्यूजीज अंदर आ चुके हैं हिंदुस्तान में। तो जब तक आपकी सिक्योरिटी मजबूत नहीं होगी, आप अपने कंट्री का कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप अपने घर पर दरवाजा रखते हैं, उस पर ताला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ताला? क्योंकि कोई अंदर ना आ सके। आपकी कॉलोनी में गार्ड क्यों लगता है? कोई अंदर ना आ सके। अगर आपकी कॉलोनी में गार्ड नहीं होगा तो आप देखेंगे कि जो सारे जो चोर वहां पे उचक्के वहां पे आके आपके घरों में चोरियां करेंगे। सो व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जब आप देखते, इसीलिए एक कंट्री का डिफेंस स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट कंट्री। अब दूसरी चीज, आपका जो मुद्दा है कि ये देयर हैज टू बी अ बैलेंस। डिफेंस पे भी खर्चा होना चाहिए, और एजुकेशन पे भी होना चाहिए, हेल्थ पे भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स पे भी होना चाहिए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कंट्री में अगर आपके हॉस्पिटल्स बनेंगे, आपके रोड्स बनेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उससे बाहर की इंडस्ट्रीज भी इंडिया में आके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगी। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हमारी जो इंडिया में बढ़ेंगी। तो ये एक डेलिकेट, एक बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन होता है गवर्नमेंट का। तो इसको आप एक कंट्री की सिक्योरिटी को पैसों के साथ मत तोलिए, बिकॉज सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। डू नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स लाइक दैट। हमको अपनी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत रखना है कि बाहरी ताकतें हमारे देश के अंदर ना आ सके, एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। आई होप आई हैव आंसर्ड। यस, इंटरनेट की खूबसूरती है कि हम जुड़ते हैं और जुदा हो जाते हैं। तो खुशी की बात यह है कि सुरेश प्रभु जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। इसलिए आगे बढ़ते हुए मैं मृणाल को आमंत्रित करती हूँ अपना प्रश्न रखने के लिए। So
अभी आप सुन रहे हैं अच्छी तरह से? जी सर। आप जी कैन सर। यू हियर मी? यस सर, वी कैन हियर यू। ओके, गुड। सो मैं आपको बहुत भी धन्यवाद भी देता हूं और आपको बधाई भी देना चाहता हूं क्योंकि अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें हमारे सभी युवा लोग, सभी छात्र इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत उनका स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। ये बहुत ही अच्छा संवाद चल रहा है। अब आप भी अपने विचार Again, the audio. थोड़ी देर में सर हमसे फिर जुड़ेंगे, तो हम पहले सेशन की ओर फिर से आ जाते हैं। एंड इसके लिए आई इनवाइट साकिब फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। You know, I'm reminded of a game called musical chairs. यस सर। जिसको सीट मिलती है वो उस पे बैठ जाता है. So it's happening today like this. Doesn't matter. Oh, carry on. I am really, I have attended at least several hundred webinars. I think this is really creating complication in terms of the kind of platform you're using. I don't know what is the reason. Anyway, let me complete it as quickly as possible so that before we get disrupted again. As I was saying, this is a very important event and you are discussing the role of service sector. I really want to congratulate you. As you know, India is a service sector dominated economy. Unlike China, which is the second largest economy of the world, where China's GDP comes almost 40% from industry, whereas India's more than 60% comes from services. And as we are going to see in the future, the service sector will be growing faster than any other sector, obviously because agriculture, industry and services put together, you calculate the GDP of a country. But agriculture has a limited scope to grow. For a simple reason, agriculture cannot grow unless there is a land, there is a water. And land of the world is limited, water of the world is limited. So obviously you cannot bring about a kind of growth rate, double digit, triple digit growth rates for agriculture. It is not possible. So obviously service sector can grow faster and therefore service sector fortunately has the ability to provide a lot of jobs to the people in the world as well as in India. As you can see very clearly that you are all living in the Middle East. You people, your parents, your brothers, your sisters, they send more than $87 billion a year to India's economy. And what do? They mainly work in service sector. Many of our friends, I'm very proud of my Indians who work in the Middle East, sometimes in the temperature which is more than 50 degrees centigrade, and work so hard, and they do contribute in various areas. So some work in the field for construction, some work in the offices, some work the banks, some runs the airlines. So all of them put together send such a large amount of money. But most of them, if not all, are in the service sector. So service sector has the ability to create jobs more than any other sector. And therefore, in the future, the growth of service sector will be very important for India's growth, but also Indians' growth. There are two different things. Whether India is growing, yes. But whether Indians will benefit from the growth depends upon how the growth is actually distributed across the various sections of the society. In case of industry, even today, though it's only 16% of India's GDP, we don't have that many people working in the industry. Agriculture obviously has more people, but that's called disguised employment. That means we don't need that many in the agriculture, but still they are there because they have no other choice. So the only sector which can now create jobs of a significant nature, meet the aspirations of young people when you all will like to take up jobs, when you become professionals, that only opportunity will be the service sector in a significant way. Unlike industry, which is now going to be dominated more and more and more by technology, and we are saying that the fourth industrial revolution is around the corner, which in fact will have more technology. And more the technology, less will be the people that will be needed in that particular sector. So service sector can create large number of jobs. And as I said, India's external sector, which is balance of payment. When we buy something from abroad, we have to pay for it in foreign currency.
When we get something back into India, that's the only money we can use to buy something from abroad. Like India needs so much of oil, gas. Where do you buy it from? From the Middle East. So if there is no money coming into India in the foreign exchange, how can you buy it? And the foreign exchange is given by your parents, your sisters, your brothers, your relatives who work in the Gulf mainly. Of course, money comes from other sectors also. India is the single largest recipient of remittances in the world. And those remittances are sent by your parents, your friends, your family. So we are really proud of you. I'm very happy that service sector is the topic that we are discussing. I can see some young bright girls and boys who are so smart that they will be the future leaders of the world, not just for India or in the Gulf. So I really wish you a great success. I know the technology is a solution, that's why I can talk to you. But technology also is a problem because when it develops a glitch, like the one we developed a little while ago, I cannot see you, you cannot hear me. But I am very sure that you will all, whether you hear me or not, but I'm very sure when you grow old, your voices will be heard globally. Why? Because you will speak a language, you will speak a content which will be relevant to the world. And therefore, the world will have to listen to you. You have a challenge because many of you come from India, that India is the longest living civilization in the world. So you must carry those civilizational values, but also ensure that India stands for friendship with many countries in the world, most countries in the world. So you must develop good bonds with each other, with other communities, make sure that we actually as a humanity we prosper. Because Indian philosophy teaches us that world is one family. Vasudhaiva Kutumbakam. If that world is one family, how can we distinguish between two members of the same family? So we must respect each other, work with each other, love each other, and do it in a way that those who try to disrupt peace, we try to ensure that they are marginalized, but at the same time, your voice of sanity, your voice of love, your voice of making sure that friendship grows is become louder and louder. I hope that happens. I once again thank you for doing this. I will be happy to answer questions if there is no more disruption caused by the technology. So please go ahead. सर, आपके समय का सम्मान करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अर्चित को। Sorry. Hello. Good evening, sir. Yeah. I'm Archit, and this is my question to you. Fast growing technology is helping many sectors to grow and become more efficient. How is the service sector going to be affected by technology and development in the next 5 years? And what should the next generation prepare for? Actually, when we say technology and service sector, technology itself is also service sector. When you talk about service sector, broadly, we divide the economy into three broad parts. One, we talk about industry, where we actually manufacture on shop floor, or mining, or construction, that falls into that group of activities. Other activities, agriculture, where we grow something from the land by using something for the food, the fruits, vegetables, all is this part of agriculture. Even horticulture, agriculture, fisheries, all of that will be falling, dairying will be falling in that broad category. Remaining is service sector. So in each of these, there is a technology. So technology itself is not a standalone issue. Technology is all pervading. When you develop technology for, say, communication, it's a service sector. You develop technology to make sure that you have better hospitality management. That's also in service sector. So technology will have an impact. Technology will be influencing each and every part of our socio-economic activities. But technology has the ability to probably, though the human beings is a very paradox, that who developed technology? The human being developed technology. And what happens after technology developed, it's not all the times, been many times, that technology displaces people. Like human beings develop robots. And now the robots are saying that we don't need people. So that's the challenge, that you create something because of your own ideas, and that idea itself kills the possibility of human beings participating in that activity in future.
So that's a very big challenge we are facing now, and particularly now when we'll have artificial intelligence, where we'll have virtual reality, where we'll have probably something which is beyond our imagination that technology is now working on. I think we are going to have serious challenge. At the same time, I always believe that technology is something we cannot prevent from coming in. It will happen automatically. What is technology? Is a function of brain. Somebody is thinking about it and somebody do it. So you cannot stop somebody's brain from working on it. Only thing we have to do is that use wisdom, which is also part of our brain, is part of our thinking. Use wisdom in such a way that the technology that will develop will not be harmful to society. For example, we cannot create an artificial intelligence in which we create a human being which has the ability to think like what we do, but it's a machine created human being which can then create huge problems. So we need ethical standards to govern the use of technology. I hope we do that. Thank you, sir, for that informative answer. Moving on, I would now like to call Ayush to ask his question. नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष बिसोय। जब मैं इस विषय पर जानकारी इकट्ठा कर रहा था, मुझे यह पता चला कि वर्तमान में भारत के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 60% योगदान है, लेकिन जितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, उसमें से केवल 25% लोग सर्विस सेक्टर में कार्यरत हैं। तो मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि भारत के 2047 के सपने को पूरा करने में सर्विस सेक्टर का क्या योगदान रह सकता है, और आने वाले समय में उसमें रोजगार के बढ़ने की क्या संभावना है? देखिए, आपने जो ये सवाल पूछा है काफी बुनियादी तौर का सवाल है। ये ऐसी बात है कि आज हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो बहुत कम है, यानी जीडीपी में। लेकिन आप यदि देखेंगे तो आज भी 60% से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। यानी ऐसी स्थिति है कि जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं उसका योगदान जीडीपी में बहुत कम है। उससे थोड़ा सा अच्छा योगदान है सेवा क्षेत्र का, जो आपने सही फरमाया। उसको भी हमें ठीक करने के लिए एक ही बात करनी पड़ेगी, जो अभी हमारे देश में कोशिश जारी है, कि हमको लोगों में स्किल डेवलपमेंट करने पड़ेगी। इसका नतीजा ये होगा कि स्किल डेवलपमेंट के कारण जो लोग काम करेंगे सर्विस सेक्टर में, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी काम करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सर्विस सेक्टर की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। ये आईटी में जो लोग काम करते हैं वो अच्छा कमाते भी है, उनकी आमदनी भी अच्छी रहती है। लेकिन बहुत सारा आईटी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, वो जो काम शायद देश में रहते करते होंगे और या विदेश में भी जाते होंगे, लेकिन बहुत सारा काम विदेशियों के लिए किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बैक ऑफिस भी होगा या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी होगा। ये सब हमारे देश में होता है। उसका मतलब ये हुआ कि आप काम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आपके काम करने वाले जो पेमेंट करने वाले जो आपके कस्टमर है, वो शायद विदेश में, अमेरिका में होंगे, यूरोप में होंगे, जापान में होंगे, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो हमें ये भी आज आने वाले दिन में करना होगा कि हाउ कैन वी डेवलप आवर सर्विस सेक्टर जो विदेश के लिए भी और काम करेगा। जैसे कि नर्सिंग इज अ सर्विस सेक्टर एक्टिविटी। अभी हम आपको पता होगा कि पूरे विश्व में सब जगह में जो बुढ़ापे के रहने वाले लोग हैं, जो उम्र में ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो उनके ओल्ड एज केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। उसके लिए हमें नर्सिस लगेंगे, खास करके जेनेटिक केयर करने के लिए लोग लगेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे? हमारे देश से मिल सकते हैं। तो हमारे सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय इसीलिए हो सकते हैं कि उनको स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो हो सकते हैं। वो करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो कार्यक्रम अभी चला रहे हैं वो भी चल रहे हैं। मैं आपको मेरे छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं लोकसभा में 4 बार चुन के आया था कोंकण से। वहाँ मेरी पत्नी, जो वैसे तो जर्नलिस्ट है, वो थी भी, बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस में काम किया, एडिटर का काम किया उसने। आज वो हमारे एक एनजीओ मानव साधन विकास संस्था चलाती है कोंकण में। वहाँ पर 2000 गाँव में आज तक 70 से 80 हजार लोगों को, ज़्यादा करके महिलाओं को, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया। उनकी आमदनी भी बढ़ी है
और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वहाँ काम करने वाली, वो नर्सिंग कॉलेज भी चलता है, उसके अलावा जन शिक्षण संस्थान भी है, 2000 गाँव में परिवर्तन केंद्र भी है, साइकिल बैंक है और स्विंग मशीन बैंक भी है, तो लोगों को सर्विस सेक्टर में काम मिलने के लिए। ये सभी का असर यही रहेगा आने वाले दिनों में कि हम देखेंगे कि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी, ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, देहाती क्षेत्र है, वहाँ पर भी आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो आने वाले दिनों में, जो आपने सही बात कही कि सर्विस सेक्टर में लोग बहुत काम करते हैं और लेकिन उसका जीडीपी में उसका प्रमाण ज़्यादा है, तो जो काम मेरे उमा प्रभु जी, मेरी पत्नी जो करते हैं, इसी तरह का काम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस स्थिति में जरूर बदलाव आएगा। Thank you, sir. We had a wonderful session. Hello. Hello. I would like to invite Suresh Prabhu for to share his experience. Hello. I think I'm really sorry. There seems to be some technological issue which does not allow me to hear you properly, or maybe sometime you couldn't hear me well. So I think we are talking about technology, and you can see the challenges of technology. So I'm really sorry, but not able to hear you. But let me just conclude by saying that service sector will continue to dominate the world economy. In fact, there is also, in a way, commodification of services, which is already happening. That services will be sold like commodities in a significant way, and that's what is because of technology. That again is going to happen in a significant way. A consequence of that will be seeing that there will be large services will be offered in a package form. I think this is a time we should get ready for it. Schools are the right places where we learn about all this. Colleges are the right place to develop those abilities more, and some more specialized institutions where we'll actually fine-tune our skills. So I hope education becomes the guiding principle for making this happen. Let me thank you for inviting me. When I come next time into your country, I'll visit your school and will talk to you for a much longer period, when there will not be this barrier of technology which will prevent me from hearing you or you hearing me. In any case, I hear the feeling of all of you together. I can hear those feelings that, like you can send the sound of heart. So I can feel that you are really so much excited about doing these things. I want to congratulate you, congratulate your professional management. I want to congratulate your faculty, and I really want to congratulate my dear young friends for making this happen. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable time. Now, we will continue with Mr. Rajan Kochhar ji. I now invite Sagarika for her next question. There has been some issue. We'll continue with Sanika's question. Yes, sir. The next question is, what are the different kinds of global security and how should they be ranked in order of importance? It's a very good question, because global security can be divided into many parts. One is external security, one is internal security, and the other is health security, food security, environment, climate change, and things like this. So these are and water security. So these are 5-6 major areas which are going to impact us in the next 2 decades. Most important for a nation is its internal security. If you are internally stable, if you are internally strong, if the government of the day can meet the aspirations of the people, there won't be any kind of terrorism, there won't be any kind of insurgency within your country.
Problems take place when there is poverty, when there is unemployment, and a lack of opportunities for the youth in the country. Then they resort to other methods and get influenced by the external players. Now, these external players are going to exploit your internal situation. So it is extremely relevant here that for any nation to be strong, it has to be internally strong. The same thing of your human body. If your lungs, if your pancreas, and if your other organs, liver, kidneys, are not strong, then you will also not have a feeling of well-being. The same is for the country of a nation or a nation. So I would rate first as internal security, then your external security, because external security is important. You have to man your borders. You have to ensure that nobody enters your house. Like the example I gave you of a guard in your colony. So the external security I would rate the next. The third I would rate the energy security, because energy today is one of the most important aspects which a nation aspires for. If you don't have electricity, if you don't have power, if you don't have these oil, gas, all these are your energy securities. So a nation, if it wants to be called itself a superpower, must be self-sustained in terms of energy. It could be coal, it could be gas, it could be water, turbines are there generating electricity, hydroelectricity and all that. So extremely relevant is your energy security, and then I would actually rate your health security, because of the COVID example I gave you. It's important that you have good hospitals, good surgeons, good doctors, medical colleges, universities, nursing staff, and the support staff. So it's extremely important to have the infrastructure available in the country. And we tend to rate this slightly lower in the priorities is our environment, all the climate change. Because see, a climate change is not affecting us today, but it is going to affect our next generation. The pollution is not actually affecting us, directly impacting us now, but it is going to impact us after 10 years. So we also have to take into account the environmental security aspects, and from now itself we have to gear ourselves up. And lastly is the water security, as I said, that you have to harness water. Your water levels are going down in the country. Do you know in Chennai, even if you go 400 feet down, you will not find water. So these problems have started emerging now. Rivers are not getting, we are not able to harness the water from the rivers and store them. So there are floods and there are famines at the same time. So these are the realities of life, and I would rate this as in the order of importance which I have given, though I feel that each one is important. This kind of rating, for the sake of discussion, I can give, but for a nation to progress, it has to focus on each one of these areas. Only then it can be called a progressive nation. And unfortunately, I'll not be able to take on any more questions. I have a TV program after this.
So I would you conclude like this, and in the end, I would like to say an extremely wonderful discussion with you people, the future of the country, the young boys and girls, and your faculty and your management. You are running a very fine institution. My best wishes to your institution, and my best wishes to each one of you, whether you are present here or not, to the entire fraternity and the alumni of Bharatiya Vidya Bhavan, a wonderful organization you have created, and it is a temple of learning. Your institution is a temple of learning, and I'm sure you will make the most of these opportunities here, taking back knowledge, because understand one thing, at the end of the day, knowledge is power. If a person has knowledge, he will have the power, and others will actually come to him to seek information, to seek guidance. So knowledge is the most important. Saraswati, as we call it, goddess of knowledge. So please make use of this wonderful opportunity you have in your school, and I wish each one of you the very best. Being a Fauji, I will be able to only speak to you what comes from my heart, and that is what I am wanting to convey to you in this forum. My best wishes to each one of you, and thank you for inviting me over and to have a wonderful sharing of ideas with you. All the best. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you so much for your time. We really appreciate it. It was really informative and enlightening for us. And with this, our first session of PIES Talk comes to an end. We would like to appreciate the presence of Suresh Prabhu ji and Major ji. हमारे बड़े बुजुर्ग सदैव बैठकर चर्चा करने की सलाह देते थे, पर पहले कभी समझ नहीं आया क्यों। आज समझ आया कि बैठकर चर्चा करने का महत्व क्या होता है। पायस टॉक के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत का दौर चलता रहेगा। साथ ही हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहे हमारे तमाम दर्शक, आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं। धन्यवाद। Thank you.